Okay, good morning to all. Just let's just start with the class. I'll share the book with you people. So we were on session 3 operating systems, and we have done this that it's an interface between user and hardware. it, it is a link between user and hardware. If user wants to say something or wants to pass on something to the system, it has to go through the operating system. तो जो भी आपको pass on करना है, pass on in the sense like if you want to give a data, give some data to the CPU, or you want to give certain instructions to the CPU. So these instructions and data can be given in with the help of operating system only. I told you that we should know some of the popular names of all operating system. Like Windows is a common one, Linux is there, Unix is there, right? MS DOS, Solaris, Mac OS. Then I told you that mobiles also have operating systems like your Android is one operating system, iOS is an operating system जो आपके Apple के phone में होता है, right? So this was the structure. We ended up here functions of operating systems. Now operating system has 5 major functions, right? In all we say generally अगर हम बात करें तो whatever important components tasks are there of a system, all are managed by operating system. ठीक है, वो टास्क जो है वो 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए. Communication manager, so operating system acts as a communication manager. It manage all sort of communication in between components as well as outside the system also. देन रिसोर्सेज का मतलब है जितने भी डिवाइसेज हैं या सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे हैंडल करना है. प्रोसेस मैनेजमेंट, process we know that process is any kind of data which is converted into information based on certain instructions that we give. उस पूरी चीज को हम प्रोसेस बोलते हैं, right? And there are number of processes working at one time in a computer. So उन सारी processes को कौन manage करता है? Operating system manage करता है. Then file management, we know that whatever we save or whatever computer saves, all the things are saved in the form of files here, right? So in files को manage कैसे करेंगे? It is done by operating system. And lastly, memory. So whatever memory we have in the system, that memory is also managed by operating system. Memory may all types of memory, RAM, ROM, right, or secondary memory, whatever we have, hard disk and all. So all is managed by operating system. So these are the 5 various functions of operating system. These are very important, right? Let's do it one by one. We'll elaborate these things. Communication manager. Communication is the need of the system. Without communication, the system cannot work, right? Now this is communication can be between peripheral devices also, fine. It can be between peripheral devices, it can be outside the devices also, right? Like internet, communication with the internet. So when you are connected to internet, you have to communicate with various other networks, various computers, various servers. So ये सारा process operating system manage करता है, right? Plus एक तो होता है communication within the CPU, एक होता है communication outside the CPU, right? And then there's a communication in a network, right? All this comes under this category. Like if you have devices like printer, mouse and all, and so you click with the help of mouse, the instructions goes to the CPU. This is also one type of communication. So this is also managed by operating system, right? So what happen is operating system has certain special programs.
for all the devices that are attached to it. Like for example, mouse है ना, तो mouse को recognize करने के लिए there is a special software, special program, right? Such special programs are called as drivers, right? These softwares or these programs helps the computer to recognize these devices, right? So if your driver is not working, the driver software is not working of any device, then the computer will not be able to communicate with that device. ठीक है? अब जब हम माउस और कीबोर्ड और ये सब जो डिवाइसेस, जो कॉमन डिवाइसेस हैं, इनके ड्राइवर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री लोडेड आते हैं, पहले से लोडेड होते हैं, इसलिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती. बट इफ यू वांट टू कनेक्ट लेट्स से अ प्रिंटर, right? So whenever you try to connect a printer, you need to install a software related to that printer only. That software is the driver software. If driver is not installed, your computer will not be able to recognize that printer, right? So ये जो drivers हैं, ये driver software जो हैं, these are special programs. They are part of operating system. They are used by operating system to recognize these devices, right? तो ये हो गया communication. Then resource management, as I told, resources में क्या क्या है? Memory, computer memory is one resource. How much CPU time should be given to a task? How many files you have? Storage devices which are secondary in nature, and input output devices. ये सारे के सारे क्या है? Resources हैं. How we are going to manage these resources, right? Now the computer has to handle all these things. The reason is that when the system has to handle many resources at one time, then there is something called as priority giving. So the system has to set the priority. कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से डिवाइस को पहले हमने कनेक्ट करना है, उसकी प्रायोरिटी बनाई जाती है, राइट? सो दैट द सिस्टम गेट्स ए optimum performance, best performance, right? So this priority is managed by operating system only. Next category, process management. As I told you, computer in one computer there are multiple processes going on at one time, right? Now how to schedule these process? Scheduling is कौन सी प्रोसेस को पहले करना है, कौन सी प्रोसेस को बाद में करना है, which process has more priority, which has more importance, and अगर कहीं CPU को process करते टाइम बीच में लगा कि there's some other important process which is to be processed first, तो वो पहले को रोक के दूसरे को स्टार्ट करना, राइट? सो ये जो चीजें हैं, ये प्रोसेस मैनेजमेंट में आते हैं. जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितना भी टास्क चल रहा है सिस्टम पे, all are processes, right? So the operating system decides which process will be processed and how much time is to be given for that process. So that is process management. Memory, as I told, that especially RAM को manage करना. Now, random access memory is the working memory. Working means whatever we work on the system, whatever we open on the computer, so that particular file will go to RAM for working, right? And we know that RAM has limited capacity. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम RAM की capacity से ज़्यादा चीज़ों को memory allocate कर दें. That will be a problem, because memory management is very important there, right? If one work is going on, some memory is allotted to that particular task, right? For example, you're listening music, let's say, तो आपके जो गाने चल रहे हैं वो जिस ऐप में चल रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में चल रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं, उनकी फाइल्स को मेमोरी एलोकेट होगी रैम के अंदर. Later on you started some more work, you started a game, let's say, right? So now the game files also need to be stored into RAM, only then the game can work. Now
This is the task of the operating system to decide, okay, do that RAM has efficient or storage capacity, right, for running that particular game, fine. So ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, कौन सी प्रोसेस को कब मेमोरी एलोकेट करनी है, और जब वो प्रोसेस खत्म हो जाती है देन इट हैज टू डी एलोकेट दैट मेमोरी, उसको रिमूव करना है ताकि दैट मेमोरी कैन बी यूटिलाइज फॉर अदर टास्क ऑल्सो, right? So there's a complex process, a lot of processes are there. So in general terms you can say all sort of memory, especially RAM, is also managed by operating system. Apart from this, if we use secondary devices, like you use hard disk for saving certain things, so where that value or that data is to be saved, right? And that also is part of memory management, which is done by operating system, right? Then operating system is takes care of all the files and folders, all file folders. Files and folders are the basically um, the place, or you can say the names where particular data is saved, right? There's one particular file for one particular thing, and there's one particular folder where all related sort of files are there. Folders हो गया group of files, तो इनको डायरेक्टरीज भी बोलते हैं. तो ये फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, इनको डिस्क स्पेस कैसे देनी है, राइट? सो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स बनती रहती हैं, उनको डिलीशन भी होती रहती है, वो कॉपी भी हम करते रहते हैं, मूव भी करते रहते हैं. तो ये सारी प्रोसेस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, राइट? All these files which are stored in the computers, they can be located through the file system. There are basically two types of file systems. दो तरह के file system है system में. एक होता है FAT, fat file system, और एक NTFS, new technology file system. Details of the files in the computers are stored and traced under a file system called as FAT. तो फैट का काम है, फैट इज यूज्ड टू कीप ए ट्रैक ऑन द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में फाइल्स कहाँ पड़ी हैं उसका ट्रैक रखने के लिए फैट फाइल सिस्टम यूज किया जाता है, राइट? नाउ इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फैट फाइल सिस्टम बीइंग यूज्ड. सीपीयू से सीपीयू वेरी करता है. कुछ सीपीयू जो है वो 16 बिट कैरी कर सकते हैं एक टाइम पे, तो उनका फैट फाइल सिस्टम फैट 16 है. कुछ में 32 है, they uses 32 bits at one time, so their fat file system is 32 bit fat file system, right? And we also have NTFS. NTFS is new technology file system, and it is faster as compared to fat, and almost it is used for the same thing, keeping the track of all the files, right? Files का track रखने के लिए. तो ये जो फैट और NTFS है, ये दोनों कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. So that files can be tracked, file can be traced, right? Another very important topic, types of operating system. Again, this part is again important. Reason is exam point of view से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन इस एरिया से बनते हैं. You must know them. First we have single tasking and multitasking. Single tasking, which allows only a single program at a given instance, means operating system which allows only one program to run at one time. One program मतलब एक एप्लीकेशन चल सकती है एक ही टाइम पे, मल्टीपल चीजें एक साथ नहीं चल सकती, राइट? तो दीज आर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे डॉस है, राइट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल, इनमें दे आर सिंगल tasking operating system. In these kind of operating system we can run only one thing at one time.
जो हमारी विंडोज है, जो हम विंडो यूज करते हैं, दैट इज मल्टीटास्किंग. दैट मीन्स वी कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एग्जाम्पल किया था, अब यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड यू ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग गेम इन बिटवीन. सॉन्ग भी चल रहा है, आप गेम भी खेल रहे हो, दो चीजें एक साथ हो रही हैं. ये मल्टीटास्किंग है, दो प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं. Right, so these are the two categories. Next two categories are single user, multi user. Single user means user is the one who is using the system. User कौन है? जो सिस्टम को यूज कर रहा है. जैसे मैं कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूँ, तो आई एम द यूजर देन. So if operating system allows only one user at one time, it is single user. If it allows many users to access the same system um, simultaneously, such systems or such operating systems are multi users. ठीक है? Single user and many user can access. Windows is example of multi user, so where uh, many people can work at one time. अब माई क्वेश्चन इज हाउ दिस हैपेंस. बहुत सारे यूजर एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? एक कंप्यूटर पे तो एक ही बंदा बैठता है, ठीक है ना, दो लोग कैसे बैठेंगे? इसमें व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू नेटवर्किंग. राइट, नेटवर्किंग मीन्स कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना. जो हमारे पुराने बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा हमारी जो आईटी लैब है, आईटी लैब ऑन फर्स्ट फ्लोर. अर्लियर आई थिंक 2-3 years back, 3-4 years back, we used to have only 5 CPUs there, right? And there were nearly 25-26 computers there. Computers we cannot say, the 25-26 terminals. 25 students can sit and work at one time, but number of CPUs were 5 only. So how that thing was managed? One CPU was connected to 5 different keyboards, 5 mouses, 5 monitors. CPU एक ही था, यूनिट्स हमने 5 लगाए थे. तो 5 बच्चे एक साथ एक ही CPU पे काम करते हैं. राइट, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डिवाइसेस. हमें एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं, जैसे अलग अलग टर्मिनल्स बन जाते हैं और हम लोग मल्टीपल माउस, मल्टीपल कीबोर्ड, मल्टीपल मॉनिटर्स वगैरह लगा सकते हैं. राइट, so that is multi use. That was based on Windows only. उसमें Windows 7 होता था. Right, so Windows 7 is an example of multi-user operating system. Many people can work at on one operating system at one time. Right, and we have to register such accounts. Right, all users must be registered users. Register मतलब उनके हमने अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं. ठीक है, जब हम आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका नाम आता है, that is registered name. So we have to create 5 different or many different register names for different users, but that can be done. Right, so that is multi-user operating system. Then we also have a real-time operating system. These systems ensure that the response time is fixed and they are categorized as real time. Response time fix होता है. Right, अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं. Like for example, you go to a bank, right? You or let's take another example for more better understanding. Let's you go to a counter where you can book one railway ticket. ठीक है, रेलवे टिकट के काउंटर पे जाते हो आप रेलवे टिकट बुक करने के लिए. राइट, you book one seat in one particular Shatabdi Express, let's say. Right, you are allotted seat number 10. ठीक है, आपको सीट नंबर 10 जो मिल गई है कोच नंबर A1 में. और now what happen is once that seat is allotted to you, that seat cannot be allotted to other members. Like at the same time, if some other person goes to some other counter, वो अगर सीट बुक कराता है तो उसको वो वाली सीट नहीं मिलेगी जो आपकी बुक हो चुकी है. Right, so this is a kind of
रियल टाइम सिस्टम, राइट? रियल टाइम मीन्स जो भी रिस्पॉन्स बनता है इमीडिएट रिस्पॉन्स बनता है, एंड दैट इज फिक्स्ड, right? So they are used basically where applications are there which needs quick processing, where processing is to be done in few microseconds, milliseconds, and the things are reflected everywhere. ठीक है ना? So for example, some more example is anti-aircraft missile system. Anti-aircraft missile system क्या करता है कि whenever it finds some enemy in that range of signals, right? उनको एक रेंज स्पेसिफाई किया जाता है कि इस रेंज में अगर कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट मिले तो इमीडिएटली या फिर एयरक्राफ्ट कोई बॉम्ब ड्रॉप करता है तो उस बॉम्ब को डिटेक्ट करके इमीडिएटली वो उसको फायर करता है, बॉम्ब को डिसेबल करने के लिए, राइट? This is a immediate kind of response, right? So this is anti-aircraft missile system. तो वो ट्रैकिंग करता है based on certain criteria, उसको pre-loaded criteria दे दिया जाता है और वो उसको इस हिसाब से आइडेंटिफाई करके रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, राइट? तो ऐसे जो सिस्टम्स हैं, there we install certain special kind of operating systems which are called as real time operating systems, right? The next one is batch processing. Batch processing is the simpler example is that it creates batches. मतलब similar jobs are clubbed together. जो एक जैसे दिखने वाले टास्क हैं उन सबको क्लब कर दिया जाता है और उनको एज अ ब्लॉक प्रोसेसर को सबमिट किया जाता है, सबमिटेड एज a block to the processor for execution, right? So user intervention is minimum. The user cannot interfere much in the system. So similar job एक साथ क्लब करके सबमिट करने का फायदा ये है कि सब अगर सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स हैं तो उनको प्रोसेस करने में सीपीयू कम टाइम लेता है, राइट? So when the block of jobs are given to the CPU of similar nature, then jobs are picked one by the processor and they are executed. एक एक करके वो उसको execute करता रहता है. But similar jobs देने का फायदा यही होता है कि CPU को प्रोसेस करने में टाइम कम लगता है, टाइम कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है, right? So certain operating systems are specially designed to handle these batch processing systems, right? So these were the types of operating systems. So we have done some important types. इनकी definitions जरूर कर लेना. All these definitions are quite important, right? And they are asked many times in exams. और secondly, इनमें जो differentiation है जैसे multi user, single user, multitasking, single tasking, इनमें जो difference है, difference भी बहुत important है, ठीक है? जनरली क्वेश्चंस आपको डिफरेंस के फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो काइंडली प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट? नेक्स्ट वी हैव ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक, राइट? यूजफुल इन द सेंस, ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है? सिस्टम, अ कंप्यूटर सिस्टम, as we discussed in the beginning also, that computer system में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, and lot of problems we face sometimes. So how will you handle these problems, right? How will you identify that the problem you have encountered is because of which reason, किस रीजन से वो प्रॉब्लम आई है? तो ये हम इस यूनिट में, इस सेशन में समझेंगे कि हाउ दीज थिंग्स आर बेसिकली हैंडल्ड, राइट? हाँ जी बेटा. सर, जो आपने कल असेसमेंट दी थी उसमें से मुझे एक प्रॉब्लम थी. हाँ जी. लास्ट वाले पार्ट में वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ.